Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were doing the topic that was inventions, workplaces from the unit number 1, so the unit number 2, that is science and technology. Today we are going to start with the next topic from the unit number 2 only, that is body talk. So this is the next topic that we are going to start in today's session. So the topic is body talk. Okay. So in this topic we will discuss about the different organs, internal and as well as external organs of our body, that what is their function, how they work, uh, how we how they what are their functions for the in the functioning of our body. Okay, so all these things we will discuss in this topic, that is body talk, and the topic is given at page number 42. So all of you open your books at page number 42, that is body talk. Okay. So here I'm starting with the tidbit. Okay, so first of all, let's read out the paragraph. Here are some questions about our wonderful body. Pick your answers from the helper. So here they have given some of the questions. So let's see, think that how much, let's see that how much we know about our body. हम अपनी body के बारे में कितना जानते हैं. So that we will came to know in this chapter. So first of all, I'll just start with the tidbits that is given here. The first is saliva present in the mouth helps us to digest the food we eat. Okay, so the first it is saliva present in our mouth helps us to digest the food we eat. So first thing is that what is saliva? So have you ever heard about the saliva? Saliva क्या होता है बेटा? जो हमारी मुंह के अंदर जो saliva होता है, जो पानी होता है, जिसको आप थूक भी बोलते हो, that is the saliva. Okay, so that is present inside our mouth. So आपको कि मैम उसका क्या यूज़ है? देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड. Okay, the saliva that is present in the mouth of the human beings, that helps it to that helps us to digest our food. वो हमें हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. Okay, which is, so that's why the saliva played a very vital role in the digestion of the food of our body. So the first is, which is the largest external organ? So let's begin with the question, that is, which is the largest external organ in human body? So human body में सबसे बड़ा external organ कौन सा है? So the largest external means bahari organ. So there are some other internal organs that are present inside our body, and there are some external organs as well that are present uh, outside our body. जो external organs हैं that we can see, touch, feel, whereas the internal organs we can't see them. मतलब we can see, मतलब देख सकते हैं, but अभी हम नहीं देख पाएंगे. Okay, मतलब आप पिक्चर्स देख सकते हो, जब मतलब डॉक्टर्स they used to do the operations, they used to see it, but generally we can't see the internal organs really as we can see the external organs. So here the question is, which is the largest external organ in human body? So human body में सबसे बड़ा external organ बाहर का, which is the largest external organ in human body? So the largest external organ in the human body is skin. Skin, the skin. This is our skin. Okay. So this is the skin. Skin is the largest external organ of human body. तो ये human body में सबसे बड़ा external organ है, that is our skin. So the spelling of skin is SKIN. That is skin. 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 That is skin. So which is the largest external organ in the human body? That is skin. So the largest external organ of the human body is skin. Moving next to the second question. Okay, this is, what is the name of the thick bone cage that protects our brain? Okay, एक मोटी सी जो ब्रेन है, मोटा बोन केज है, that protects our brain.
This is the name of a thick bone cage that protects our brain. Thick means मोटा, bone हड्डियों का, cage means पिंजरा. So ये हड्डियों का एक मोटा सा पिंजरा है जो कि हमारे brain को protect करता है. That protects our brain. So the brain is present here. You all of you are very well aware of it. So the brain is present over here. And this cage, this thick bone cage, it protects our brain. ये हमारे brain को protect करता है. Okay, that is skull, जिसको हम बोलते हैं खोपड़ी. अगर यहाँ पे नॉक करके देखिए सब बच्चे, तो यू विल फील कि यहाँ पे हड्डियाँ हैं. तो ये हड्डी किस लिए है? इसके अंदर क्या है कि जो हमारा बोन का केज बना हुआ बेटा, इसके अंदर वी आर हैविंग आर ब्रेन. तो इनसाइड इट वी आर हैविंग आर ब्रेन. इसके अंदर हमारा ब्रेन है. ओके, जो कि जिसको मतलब एक हड्डियों का मोटा सा पिंजरा बना हुआ है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है. अगर आपने कभी इफ यू हैव अ सीन स्केलेटन, अगर आपने कभी कोई स्केलेटन देखा है असली, मतलब लाइक इन द लेबोरेटरीज, ओके, या तो मतलब कहीं पिक्चर्स देखी हैं, तो स्केलेटन में देखा करिए, देखेंगे तो जो उसकी जो खोपड़ी होती है वो अलग से होती है. दैट इज ओके, दैट इज अ केज यू कैन सी देयर. ओके, एंड दैट केज दैट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. Okay, that acts as a cage boundary for our brain so that it can protect us. ठीक है, that is known as skull. Okay, so in Hindi we call it as khopdi, but that is skull. Okay, that is skull. So the question answer of the second blank is that is skull. skull, skull. Next, the third one is which muscle helps to digest food. ओके, हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी मसल है जो कि हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. सो विच मसल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड. दैट इज स्मूथ. दैट इज स्मूथ. सो स्मूथ इज द नेम ऑफ मसल. ये हमारी मसल का, मसल मीन्स ये हमारे मसल है हमारी बॉडी की एक. ओके, मसल मीन्स जो हमारी बॉडी में मसल है. आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड इन हिंदी ऑफ द मसल. Okay, so this helps us to digest food. Okay, so there is also a muscle in our body that is present inside the body. Okay, जो कि हमारा खाना, देखिए हम अपना खाना खाते हैं, मुंह के अंदर खाते हैं, and that goes through the food pipe, it goes into our stomach. ओके, बट जब वो स्टमक के अंदर जाता है, सो जब उसको प्रॉपर डाइजेशन करना होता है, सो इट नीड्स सलाइवा एंड वेरियस अदर ऑर्गन्स इन आर द ह्यूमन बॉडी दैट परफॉर्म्स इट्स फंक्शन एंड स्लोली वी डाइजेस्ट आर फूड. Okay, so here we are talking about one of the organ in our body that helps to digest our food. Okay, digest mean खाना पचाने में हमारी help करती है. Okay, अगर if your digestion is not proper then you will face various problems related to your stomach. Okay, आपको अपने stomach से related बहुत problems हो जाएगी and you will not be able to मतलब you will always feel some मतलब आपको अजीब सा लगता रहेगा. Okay. Okay, so that is this there's a muscle that in the body, human body, that helps to digest your food. That is smooth. SMOOTS, that TH, that is smooth. SMOOTH, that is smooth. Moving next to the fourth one. Through which organ does food go from the mouth to the stomach? So there are various organs in our body. ओके, सो वी नो, तो वी नीड टू टेल दैट हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिससे कि जो हमारा खाना हमारे माउथ से डायरेक्टली हमारे स्टमक में जाता है. सो इफ़ हमारा खाना हम खाते तो मुंह में है, लेकिन वी फील लाइक दैट आवर स्टमक इज़ गेटिंग फुल. हम खाना जब खाते हैं हम कहते हैं पेट भर गया, तो हम खाते तो मुंह से हैं. तो हाउ डज़ द स्टमक फुल? बिकॉज द फूड वी ईट दैट गोज डायरेक्टली इन आर स्टमक. ओके, सो ऐसा नहीं है दैट यू विल जस्ट ईट इट एंड वो डायरेक्टली नीचे आपके पेट में चला जाएगा. नो. ओके, सो द फूड दैट गोज फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, दैट इज नोन एज द फूड पाइप. Okay, so the organ through which the food goes from our mouth to our stomach, that is known as food pipe. Okay, through which does through which organ does food go from the mouth to the stomach? That is through the food pipe. So food pipe से जो हमारा खाना है वो हमारे माउथ से होते हुए through the food pipe that is present over here and it goes directly into our stomach. That is food pipe. FOOD, food.
पाइप, PIPE। तो हमारे जो खाना है हमारे माउथ से हमारे स्टमक में कैसे जाता है? थ्रू दी फूड पाइप। नेक्स्ट द फिफ्थ इज हाउ मैनी टीथ डज एन अडल्ट हैव? ओके, एक अडल्ट के कितने टीथ होते हैं? सो हाउ मेनी टीथ डज एन अडल्ट हैव? एन अडल्ट हैव 32 टीथ। अडल्ट मीन अ ग्रोन अप। सो जिसकी 18 ईयर्स 22 ईयर्स प्लस होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज एडल्ट। सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टीथ एंड डजल्ट एन अडल्ट हैव? एक प्रॉपरली ग्रोन अप पर्सन के कितने टीथ होते हैं? एन अडल्ट हैव 32 टीथ, जिसको हम बोलते हैं बत्तीसी। ओके, बत्तीसी क्यों बोलते हैं? 32 को हम हिंदी में बोलते हैं 32। सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज बत्तीसी। ओके, so an adult have 32 teeth. So the answer for the fifth is 32. You can write 32 in the numeric as well as in the words. Next, the sixth is which is the largest internal organ in human body? So now we are talking about the largest internal organ. इससे पहले हमने largest external organ की बात की थी, that is skin. So now we are talking about the largest internal organ in the human body. So the largest internal organ in the human body is liver. The largest internal organ in the human body is our liver. तो हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा organ है, that is our liver. That is our liver. So liver is the largest internal organ in the human body. So the spellings of liver is Liver. Liver. That is liver. So liver is the largest internal organ in human body. Moving next to the seventh one, which organ in our body pumps blood? So हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है that pumps the blood, जो कि पूरी बॉडी में जो खून को पंप करता है, और it also purifies the blood. Okay, so that is our heart, जिसको हम बोलते हैं दिल. So the heart, that plays a vital role in the smooth functioning of the human body. Okay, because it performs various functions like providing oxygen to the each and every जो हार्ट है हमारा बेटा, ये बहुत सारे it performs a various function, जैसे कि प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचाने का काम क्यों कौन करता है? दैट इज़ डन बाय द हार्ट ओनली. Other than that, it also pumps the blood so that it can reaches to through the nerves, it can reaches to all the other organs of our body. ओके, तो ये हमारे बॉडी में जो ब्लड को पंप करता है ताकि जो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, नर्व्स के थ्रू वहाँ पे हमारा ब्लड जा सके. ओके, नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्यूरिफाइज द ब्लड. या इसके अलावा इट ऑल्सो प्यूरिफाइज द ब्लड. ठीक है, वो हमारा जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई मीन्स साफ भी करता है. ओके, सो विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? दैट इज सॉरी, विच ऑर्गन इज इन आवर बॉडी पम्प्स ब्लड? सो दैट इज आवर हार्ट. तो कोई इसको हर्ट नहीं बोलेगा, यू विल कॉल इट एज हार्ट. ओके, हार्ट, HEART, हार्ट pumps blood in our body. Moving next to the eighth one, which part of our body has the maximum number of bones? So हमारी body के कौन से part में सबसे ज़्यादा bones हैं? So the maximum number of bones we are having in our hands. So हमारे हाथ में, okay, we are having the maximum number of bones in our hands. तो हमारे बाकी as compared to the other parts of the body, the hand has the maximum number of bones. Okay, the hands has the maximum number of bones in the human body. Okay, so this is the answer of the eighth one. The answer is hand, HAND, hand. Moving next to the titbit, that is another given here. Eye muscles are the busiest muscle in the body. They may move more than 1 lakh times a day. जो eye की muscles है बेटा, वो हमारी सबसे busiest muscles हैं. ओके, सो एज यू कैन सी द माई आई मसल्स, कभी आँख एकदम खड़ी रहती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी हम फ्लिक करते हैं. ओके, सो देखिए जो हमारी आई मसल्स हैं, दीज आर द बिजिएस्ट मसल्स. जो हमारी एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे आई मसल्स से ही नज़र आते हैं. ओके, सो जो हमारी आई मसल्स को कहा जाता है कि दे आर दी मोस्ट बिजिएस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी. और एक दिन में इट मूव्स नियर अबाउट 1 लाख टाइम्स. सो एक दिन में ये नियर अबाउट 1 लाख टाइम्स इट मूव्स.
That's why it is considered as one of the busiest muscle in the human body. और एक दिन में ये more than 1 लाख से ज़्यादा बार it just keeps on moving. So can you imagine that how much time of how what kind of a hard work is being done by the eye muscles in our body. So this is the eye muscles is the busiest muscle in the human body. If the question okay, so यहाँ से question क्या है, which is the busiest muscle in the human body? So the answer is the eye muscle. Okay, so this is from the topic that is the body talk. Okay, so and one more important thing that you need to do the tidbits as well. जितने भी tidbits दिए होंगे बेटा, you need to learn it because some questions come from it from there as well. चलिए, so now we will move to the next topic from the same, that is whom to consult. Okay, that is given at page number 43, that is whom to consult. So the next page you will open in your books, that consult. Okay, whom to consult. So what is the meaning of the topic whom to consult? whom to consult means किससे consult करें, किससे पूछें, किससे बात करें, किसको दिखाएं. That is known as whom to consult. So here basically we are talking about the doctors. Okay, if you are facing any kind of problems regarding any particular organ in a body, so there are certain doctors that dealt with the problems related to the particular organ. तो आपको पता है बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं. सम आर फिजिशियन, सम जिसको हम डेंटिस्ट. if you are having any problems with your teeth, gums, you go to the dentist. Okay, and if you are having some problems with your तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो. एंड व्हेन यू हैविंग प्रॉब्लम विद योर बोन्स, ओके, समवन बोन इज ब्रोकन, किसी की टूट जाए, हड्डी में कोई प्रॉब्लम होती है, यू गो टू द ऑर्थोलॉजिस्ट. Okay, so now here we will talk about the different doctors, those who deal with the problems of the particular organ. देखिए बेसिकली व्हाट वी कॉल देम, हम जैसे डेंटिस्ट है, जो हम प्रॉब्लम दांत की या जॉ की होती है, वी गो टू डेंटिस्ट. बट एक्चुअल इन दिस टॉपिक we will learn about that what is the actual or the scientific name of those doctors. Okay, उनका actual name क्या होता है और हम उन्हें क्या बुलाते हैं. Okay, so let's begin with the first one. Okay, so identify the kind of doctors whom you will consult if you have a problem with these body parts. So here we will identify the doctors कि जिन अगर हमारे organ में हमें अलग अलग parts जो organ है हमारी body में उसमें कोई problems है तो हम किसको consult करेंगे. Starting with the first, you have severe pain in your leg and your mother thinks you have broken one of your bones while playing football. Okay, so now you're going to consult a orthopedic surgeon. So now देखिए question क्या है, you have a severe pain in your leg. आपके पैर में बहुत ही severe pain है. Severe pain means unbearable. कोई ऐसी चीज़ जिसका दर्द आपसे बर्दाश्त ना हो, that is known as severe pain. ओके, आपके पैर में बहुत ज़बरदस्त दर्द है एंड योर मदर थिंक्स यू हैव ब्रेकन वन ऑफ योर बोन वाइल प्लेइंग फुटबॉल. उनको लगता है, आपकी मम्मी को लगता है कि आपके पैर में इतना दर्द हो रहा है. दैट मीन्स व्हेन यू वर प्लेइंग द फुटबॉल, जब आप फुटबॉल खेल रहे थे तो आपने गलती से अपने पैर की कोई हड्डी तोड़ दी, टूट गई, आपके पैर की हड्डी टूट गई है. सो दैट मीन्स नाउ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बोन, वन ऑफ द बोन इन योर लेग. आपके लेग के बोन से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, either it is broken or it is having the hairline fracture or whatever it is. So she will take you to a doctor. So what kind of doctor she will going to consult? So she will consult to a orthopedic surgeon. So in a normal language we call it as ortho surgeon or ortho doctor, but the scientific name or the actual name or the complete name is orthopedic surgeon. Okay, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं, so that is the actual name is orthopedic surgeon. So for problem related to the bones we will go to the orthopedic surgeon. So spelling of the orthopedic you need to write it, that is ORTHOPAEDIC, that is orthopedic surgeon. SURGEON, surgeon, orthopedic surgeon. ORTHOPAEDIC, orthopedic surgeon. SURGEON, orthopedic surgeon. Moving next to the second one. Okay, second one is, you find it difficult to read what the teacher writes on the board and the teacher has asked
you to consult a doctor. Okay, you are sitting in a class and the teacher is teaching you. Now the 2 years back when we were in school, okay, I'd say not 2 years, only about 1 year back, 1.5 year back, आज से 1.5 साल पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो यू आपने देखा होगा कि कई बच्चे हैं, दे जस्ट व्हेन द टीचर राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, दे जस्ट कम टू द टीचर एंड मैम व्हाट इज दिस, मैम व्हाट इज रिटन हियर, व्हाट इज दिस. सम चिल्ड्रन दे यूज टू आस्क द टीचर. आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना, मैम ये क्या लिखा है, मैम ये क्या लिखा है. ओके, सो तो आप देखो, सम पीपल दे आर हैविंग सीरियस इश्यूज विद द आईज, सो दे आर नॉट एबल टू सी फ्रॉम द डिस्टेंस. ओके, वो बहुत दूर से नहीं देख पाते. ओके, एंड सम दे आर नोइंगली कि मतलब बार बार सीट से उठने का उनको मौका चाहिए. but actually some children, they do have some problems with your eyes. The reason is because they continue living they continue look into the mobile phones, they continue watch the TV. This is the reason why they face problem with the eyesight. They are not able to see clearly what is written on the board. Okay, so आपको क्या है, here they have given a condition. So actually in this chapter they have given the certain conditions, and according to the condition you need to write down the answer that what kind of doctor you are going to deal with if you are having some such issues. Okay, so the condition is difficult to read what the teacher writes on the board. Okay, तो टीचर ने आपके बोर्ड पे कुछ लिखा है एंड आपको वो लिखा हुआ क्लियरली नज़र नहीं आ रहा. ओके, एंड आप बार बार जाके मैम से पूछो कि मैम व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दिस. सो द टीचर ऑब्जर्व दैट कि यू आर डेली यू आर आस्किंग कि आप व्हाट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड. दैट मीन्स you are not able to see clearly on the board from a distance. So that means you are facing some issues with your eyes. आपकी eyes के कुछ problem है कि that आपको जो clear नहीं है, आपकी vision clear नहीं है, board पे आप clearly नहीं देख पा रहे हो distance से. So the teacher tells you, the teacher told your mother, teacher calls your mother and told her that your child is suffering some issues with the eyes, so kindly take him to a doctor. मैम ने बोला कि मम्मी को कि इसको डॉक्टर के पास लेके, इसको कुछ नज़र, इसको कुछ प्रॉब्लम है कि उसको नज़र नहीं आता बोर्ड पे. सो व्हाट विच डॉक्टर आर योर मदर इज गोइंग टू कंसल्ट. सो योर मदर इज गोइंग टू कंसल्ट ophthalmologist. Your mother is going to consult a ophthalmologist. So ophthalmologists are the doctors that are स्पेशलाइज्ड विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द आइज. तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं बेटा, ये जो आइज़ की प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, ओके, सो दे कंसल्ट विद दैट. ओके, सो दे आर ophthalmologist. Ophthalmologist, so doctors will consult you are going to consult your mother will take you to the ophthalmologist. So spellings of the ophthalmologist is OPTHALM OPTHALMOLOGIST, that is ophthalmologist. Or if you are not able to write it here, so you can write the spellings from here as well. That is ophthalmologist. OPTHALMOLOGIST, that is ophthalmologist. Okay, so this is the answer of the second one, ophthalmologist. So the doctors who specialize with the problems related to the eyes is known as ophthalmologist. Clear? Next, third one, you have crooked teeth. Which doctor will you consult? Okay, you are having the crooked teeth. Crooked teeth मतलब दांत में कीड़ा लग गया है और you had just fallen down and you have broken one of the teeth or the tooth. So whom you are going to consult so that you can get rid of the problems related to your teeth and the jaw. Okay, so you are going to consult a orthodontist. You will consult a orthodontist. आप किसको consult orthodontist, not ortho, it is orthodontist. Okay, देखिए we call it, जब हमें कोई if we have having the problems related to the teeth, so हम क्या करेंगे, we will go to the dentist. But the actual name is not dentist, it is orthodontist. Okay, they are known as orthodontist. So if someone is is suffering from the problems due to their teeth, okay, so they are going to consult a doctor that specialized in dealing with the problems related to the teeth or the tooth. Okay, they are going to consult a orthodontist. So the spelling of the orthodontist is ORTHO ORTHODONTIST, orthodontist. Spellings you can check it from here as well. Orthodontist.
ORTHODONTIST, that is orthodontist. Okay, chaliye. Moving next to the fourth. Okay, so now we'll talk about the fourth doctor. Okay, so your father has red rashes on his skin. Okay, suppose your father is having some problem related with skin, and or he is having the red. Okay, so you have just given the condition. So your father or you must be having some rashes on your skin. आपको लगता है कि डेली आपकी बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं, रेड रैशेज हो जाते हैं, उस पर खुजली होती रहती है, या some problem is some itching is also there. So whom you are going to consult? You are going to consult a dermatologist. Okay, so you are going to consult a dermatologist if you are suffering with the problems that is related to your skin. Okay, so if you are facing a problem related to your skin, you are going to consult a doctor who deals or who is specialized in dealing with the problems related to skin, that is dermatologist. So you are going to consult a dermatologist. Okay, so dermatologist ke spellings is DERMATATOLOGIST, dermatologist. So here the spelling is given here. First is the spelling of the dermatologist. DERMATOLOGIST, that is dermatologist. Okay, so for dealing with the problems of for concerning or consulting the problems related to the skin, you will consult a dermatologist. You are going to consult a dermatologist. ओके, अगर आपको डर्माटोलॉजिस्ट देखिए, इसी से आपने सुना होगा डर्मिकूल पाउडर. ओके, सो एडवर्टीजमेंट यू मस्ट हैव सीन ऑन द टेलीविजन. सो दैट वर्ड डर्मी, ओके, दैट इज बीइंग टेकन फ्रॉम द दिस. तो जो को पाउडर्स भी अप्लाइड ऑन द स्किन, पाउडर हम कहाँ अप्लाई करते हैं? स्किन के ऊपर. ओके, सो इसी से नाम लेके दे हैव गिवन द नेम, दैट इज डर्मिकूल. ओके, फ्रॉम द टर्म डर्माटोलॉजिस्ट. ओके, चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द लास्ट. Your grandfather often complains of extreme tiredness and discomfort in his chest. So now another condition they have given, that your grandfather, he keeps on saying that he is having he is suffering from extreme tiredness. वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, and he is facing some issues related to like in the skin, in the chest as well. ओके, तो उनकी चेस्ट में मतलब ही जस्ट फील सम अनकम्फर्टेबल और डिसकम्फर्ट इन हिज चेस्ट. तो ही मस्ट बी हैविंग सम पेन, feeling some pain in the chest, or some other issues like he is not able to breathe. और जब भी वो कहीं चलते हैं, सो ही जस्ट थोड़ा सा वॉक करते ही जस्ट स्टार्ट फेसिंग एक्सट्रीम टायर्डनेस. उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है. ओके, सो ही जस्ट कीप्स ऑन आस्किंग यू दैट आई एम फेसिंग सम एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट हो जा रही है इन जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वर्क. एंड अदर देन दैट ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल विद द चेस्ट. ओके, सो सी इज फेसिंग सम प्रॉब्लम. कहते हैं ना, कुछ ऐसे लग रहा है कि सीने में कुछ हो रहा है अजीब सा. सो दैट इज़ द डिस्कम्फर्ट ही इज़ फेसिंग विद हिज चेस्ट. So whom he is going to consult? So you should take him to a cardiologist. Okay, so I'm just giving a condition that is given here. So agar if some person is facing the problem related to the chest, okay, so agar किसी को कोई chest related problems है, so they must consult to a cardiologist. So the spelling of cardiologist is CARDIOLOGIST, that is cardiologist. Okay, so the cardiologist, they deal with the problems related to the heart and the lungs and the chest. Okay, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है आपकी चेस्ट में, आपके हार्ट में, तो या लंग्स में, so you or any other person who is suffering from the problems related to the heart, lungs and the chest, they must consult a cardiologist. The spelling is CARDIOLOGIST, that is cardiologist. So देखिए, इस टॉपिक में we have discussed about the various scientific names of the various doctors. देखिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ही मीन्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द बोन्स. ओके, जिसको कि हम ऑर्थो डॉक्टर्स बोलते हैं, पर द कंप्लीट नेम इज ऑर्थोपेडिक सर्जन. ओके, एन ऑप्थोमोलॉजिस्ट, दे डील विद द प्रॉब्लम, or use an ophthalmologist if you're having some issues with your eyes. Third is
orthodontist for so we can must consult the orthodontist for dealing with the problems related to our tooth and the teeth or the jaw. Next is, okay, the problems related skin. Okay, so problem related skin, we must consult a dermatologist. And the last is problem related to heart, chest and lungs, we must consult a cardiologist. Okay, so this was from the topic that has been at page number 43, whom to consult. Okay, so with this I'm just ending the today's session here only, so I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody have a great day.